Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and I welcome to each and everyone here for daily news analysis. कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. और आज है महीने का पहला दिन, इस मंथ का जुलाई 1st, where we discuss about the important news article. तो आज आपकी फर्स्ट और तो इसमें जो हम न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बेसिकली आपको पता है कि न्यूज़पेपर जो हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करने का मेन पर्पस होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, द वेरी फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग दैट यू शुड कीप एन आई ऑन दैट कि दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डिस्कस इन न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. So good morning once again guys, and before we start let me know if a voice is audible and am I visible to each and everyone. चलो जी, so very first article we discuss later on emergency के टाइम में क्या provision थी and all. We'll discuss much in detail. What exactly we discuss in newspaper analysis? We discuss about the national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. And apart from that, we also discuss about the Supreme Court verdict, any amendments, any bill which is in the parliament. This is also we discuss in daily news analysis. And here is the questions of the day. We'll ask you the 5 questions. Stay tuned. And here are quick tips. Very first article talking about the story of emergency. June 25th, ये जो date है, where India entered the 50th year of imposition of emergency, an extraordinary 21 month period that saw the suspension of civil liberties, curtailment of press freedom, मास अरेस्ट, क्या क्या चीज़ें हुई थी इस एमरजेंसी में, क्या इसका मेन कहानी थी, क्यों एमरजेंसी इम्पोज की गई थी उस टाइम में. ये बात है 1975 की. जी हाँ दोस्त, ये है जून 25 1975 और से लेके इंडिया में जो है आपका मार्च 21 1977 तक का ये हमारा एमरजेंसी पीरियड था कंट्री में. वेरी फर्स्ट टाइम वी सॉ द एमरजेंसी. So June 25th, India entered the 50th year of imposition of emergency, जिसमें civil liberties, curtailment of press freedom, mass arrest और cancellation of elections and rule by decree. What is the meant by the emergency in the modern political history of India? The emergency, which refers to the period from the June 25th, which we discussed already, from 1975 to March 21st, 1977. During which the government of Prime Minister India, that is Indira Gandhi that time, was a special provision in the in the constitution that to impose sweeping executive and legislative emergency consequences on the country. So almost अगर हम बात करें तो all the opposition's leaders that were put jail and जितने भी हमारे fundamental rights थे, including the freedom of speech and expression guaranteed, which is Article 19 Clause 1 में mention की गई है, that was also curtailed that time. आप सोच सकते हैं what legal and constitutional sanctions did the emergency have. देखो under Article 352 जो है आपका आर्टिकल 352 बहुत अच्छी आर्टिकल है अगर आप इसमें स्टैटिक टॉपिक को समझ जाएं तो. अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर्स मे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया issues a proclamation of emergency if the security of India or any part of the country is threatened by war or external aggressions or armed rebellion. बट क्या ऐसा 1975 में हुआ था जिसकी वजह से जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी जी ने इम्पोज किया था? जानते हैं 1975 में आपको मैंने पहले बताया कि आर्टिकल 352 में मेंशन की हुई है कि हमारे पास जब तक बाहर दूसरे कंट्री से वॉर नहीं होते तब तक आप इमरजेंसी को इम्पोज नहीं कर सकते, राइट. तो 1975 में इंस्टेड ऑफ आर्म रेबेलियन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल जो हुई थी चीज़ें दैट वाज अवेलेबल into the government to that to proclaim emergency. अब यहाँ पे this is the only instance of proclamation of emergency due to the internal disturbance. तो गांधी जी ने बताया, इंदिरा गांधी ने, कि internal disturbance की वजह से हुआ था ऐसा, ठीक है, जो उस टाइम वेरी फर्स्ट टाइम दिया गया.
So the two occasion in which an emergency was proclaimed earlier on October 26, 1962 में and the December 3rd, 1971 were on the ground of war. जब हमने चाइना के साथ वॉर हुआ था 62 की बात है, और सेकेंड टाइम में आपने देखा होगा जिस टाइम में हमारा वॉर हुआ किसी और कंट्री के साथ. तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, आर्टिकल 358 क्या कहता है. 358 फ्री द स्टेट ऑफ ऑल limitations that ignored by Article 19, which is right to freedom of speech and expression, right, that is imposed, and Article 359 empowers to the president to suspend the right of people to move court for the enforcement of right during an emergency. और 359 में ये सुप्रीम कोर्ट का, आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप नहीं जा सकते. सो व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड सोशल सर्कल मेडिटेड इन इंडिया इन द मंथ लीडिंग अप टू द एमरजेंसी. ऐसा क्या कहानी हुई थी जो इंदिरा गांधी को उस टाइम में एमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ी. देखो थोड़ी बैकग्राउंड में चलते हैं, बात करते हैं 1974 की. सो अर्ली इन 1974 स्टूडेंट मूवमेंट दैट इज कॉल्ड Navi Man, it means that regeneration, that began in Gujarat against the Congress government of Chaman Bhai Patel, which was seen as the corrupt. As the protest became violent, Patel fact that Patel had resigned and president rule was imposed. गुजरात में उस टाइम ये कहानी हुई. अब नवनिर्माण जो था इंस्पायर्ड बाय स्टूडेंट्स मूवमेंट, उसके बाद वहाँ पे थे जयप्रकाश नारायण उस मूवमेंट में भी के, एंड ही अग्रीड विद द टू कंडीशन दैट द मूवमेंट दैट वुड बी नॉन वायलेंट एंड पैन इंडियन एंड एम्स टू क्लीन द कंट्री ऑफ द करप्शंस ऑफ मिस गवर्नमेंट. जून 5 को क्या हुआ, स्पीच ऑफ यहाँ पे पटना में हिस्टोरिक गांधी मैदान में, वहाँ पे जयप्रकाश नारायण जिनको लोकनायक कहा जाता है, एंड जेपी गेव अ कॉल फॉर द स्क्रूपियस टू लाइक टोटल रिवोल्यूशन की बात की उन्होंने. मार्च 6 को क्या हुआ, देखो ये इसके कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसका एक रीज़न है कि इमरजेंसी को इम्पोज क्यों किया गया उस टाइम. मार्च 18 को जेपी रैलीज में इन्वॉल्व द पावर ऑफ द पीपल विद द राउजिंग स्लोगन, और स्लोगन में क्या था, वेकेट द थ्रोन फॉर द पीपल आर कमिंग. जो शहनशाही है उसको खाली करो, ये इनका एक्चुअल स्लोगन था हिंदी में, ठीक है, शहनशाही को खाली करो. उसके बाद क्या हुआ, मार्च 6 को दैट एड्रेस अ ह्यूज रैली एंड बोट क्लब इन दिल्ली, जहाँ पे जो रैली स्टार्ट हुई थी पटना में, उसके बाद फिर दिल्ली में, फिर गुजरात में. जून 12, 1975 को जस्टिस उसके बाद जगमोहन नाथ सिन्हा जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के थे, उन्होंने क्या किया, delivered a historic verdict in the petitions filed by राज नारायण that convicting जो इंदिरा गांधी है, जो जिनका इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिसेस की वजह से स्ट्राइकिंग डाउन द इलेक्शन फ्रॉम द रायबरेली, that on appeal of Supreme Court gave the Prime Minister partial relief that could the parliamentary but could not vote. मतलब वो पार्लियामेंट में तो रहेंगी बट वोट नहीं कर सकती. उसके बाद यहाँ पे थे उस टाइम में Fakhruddin Ali Ahmed that signed a proclamation of emergency. So what happened to the opposition leaders that time? Almost all opposition leaders including JP Narayan that were detained and 36,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था for the maintenance of internal security act. Maintenance of इसे नीसा कहते हैं, MISA, Maintenance of Internal Security Act, NISA. So India on Sanjay Gandhi pushed a 5-point program that included force. अब उसके बाद लीगल चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस किए उस टाइम में इंदिरा गांधी ने. व्हाट एफर्ट्स दैट वर मेड बाय द जनता गवर्नमेंट ऑन दैट टाइम में, ठीक है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन 44th उस टाइम में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 को रिमूव किया गया, दैट फॉर द इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ ग्राउंड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी. तो हाउ डिड द इमरजेंसी चेंज द पॉलिटिक्स. जनता पार्टी, जनता जो एक्सपेरिमेंट गिव इंडिया इन इट्स फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बट इट्स अ कोलैप्स डेमोन्स्ट्रेट the limit of the anti-congressium or the emergency gave India
young leaders who would dominate politics for the decade to come. लालू प्रसाद यादव उस टाइम में, जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद अरुण जेटली, रामविलास पासवान एंड मेनी अदर्स. ये कांग्रेस को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी. उसके बाद नेक्स्ट वन, ओवरलोड्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड. मास प्रोटेस्ट इन केनिया इन विच एटलीस्ट 30 पीपल वर शॉट एंड किल्ड बाय पुलिस. इसमें आपको दो रोल देखनी होगी. वन इज IMF एंड दूसरा है आपका वर्ल्ड बैंक. देखो, केनिया इज रूल्ड बाय अ प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट अ न्यू फाइनेंस बिल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट विलियम रुक्ता. तो यहाँ पे एक ही समझो कि IMF जो है, IMF डिस्क्राइब, उसमें क्या हुआ केनिया में. यहाँ पे they seen him as a more loyal for the international monetary fund IMF than to people of Kenya. So कहीं ना कहीं ओवरलोड है डेवलपिंग वर्ल्ड्स के ऊपर काम करने को लेकर के. ठीक है. So IMF describe itself as a being governed by and accountable to its member countries, but its history and management structure tells a different story of an organization that has served as a good tool for American foreign policy and work to further the interest of Western financial allies. 1944 में इसको when the IMF was created, IMF को create किया गया 1944 में. So at a conference of 44 nation, और 44 nation का जो था that was Bretton Woods conference. Bretton Woods conference. अब यहाँ पे New Hampshire, the US and global supremacy of American economic might was already a reality, with the rest of the world either devastated by the Second World War. So this power dynamic that got eroded into both the Bretton Woods twins, the IMF and the World Bank. For instance, the World Bank president is always an American, while on IMF head is always for the European allies of US. अब देखो, जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो प्रेसिडेंट है is always an American, while an IMF head is always a European of the allies. So in the theory of the function that to aid economic development and to promote monetary cooperation and stability, but in practice they have followed an unwritten mandate to foster the integration of newly independent former colonies into a global economic order, that too on terms designed to serve the interest of American capital. ठीक है जी. तो बेसिकली एक बर्डन है जो डेवलपिंग वर्ल्ड का उनके ऊपर, बट बाकी ये काम करते हैं यूरोपियन नेशन के लिए. मेजरली द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. नाउ केस फॉर अ फूड बफर पॉलिसी. ओपन मार्केट सेल्स ऑफ व्हीट एंड चना, जिसे ग्राम कहते हैं, दैट हैव help prevent runaway cereals and pulses inflation. Inflation that is based on official consumer price index stood at around 8.69%. 8.69% for the cereal in May and almost twice as 17.41% for pulses. तो FCT जो है, FCT क्या है? Food Buffer Policy. Open market sell scheme brought down retail inflations in cereal and wheat from their heights of 16.73% of 25.37% respectively in February 2023, that of 8.69% and 6.5% in May 2024. How buffer a chana help? The price of pulses have been on fire while retail inflations in double digit since June 2023. According to the Department of Consumer Affairs, that all India model most quoted retail price on a split chana dal currently stand for ₹90 per kg. तो बेसिकली यहाँ पे बात करें वोलेटिलिटी की, फिजिकल कॉस्ट की, मेंटेनेंस, बफर स्टॉक, these all things that need to be in the progress. उसके लिए यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, the NAFED, that not brought large quantity of the bumper 2021-2022 chana crops. चलो, रेजी एंड द ईयर्स ओल्ड इशू. यहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुआ था रेजी में June 9 को, उसके ऊपर में था. यहाँ PM मोदी ने टुक हिज ओथ ऑन ऑफिस फॉर अ थर्ड टर्म.
that is a reminiscent of the attack on the consultant जनरल ऑफ इंडिया. उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हुए उसके बारे में बात हुई. जैसे पाकिस्तान दैट वाज एंड सेपरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर एनकरेज्ड बाय द सक्सेस ऑफ अफगान जिहाद पाकिस्तान दैट थॉट दैट इफ अ सुपर पावर कुड बी डिफीटेड बाय अफगान इस्लामिस्ट ग्रुप अदर सच groups could be used to pressure India and Kashmir through mass upsurge violence against minorities. So these all things. पुलवामा अटैक जब हुआ था 2019 में, इट्स अंडर रूट बालाकोट एरियल स्ट्राइक 2019 में हुआ. दैट ऑल्सो अनाउंस अ डॉक्ट्राइन ऑफ प्री-एम्प्शंस दैट अर्लियर टू इट हैड used force in a limited way by way of under trial significant surgical strike in the wake of terrorist attack of September 2016. Now let's move to the next article. Where does India stand in respect of G7? Recently Italy hosts G7 and India has been invited to the outreach 11 times with Prime Minister Narendra Modi attending for the 5th time. What was the G7 summit hoping to achieve? Bridging difference between the West and the rest, that finding new ways to fund support for the Ukraine war, that investing in Africa and grappling with migration, climate change and artificial intelligence challenge that were all on the agenda for G7 leaders. They agreed to make $50 billion more available for Ukraine, or how it is important to India for G7 process. My friend, India has been important for the G7 process for several years now. That coming to the grouping attention to in the year of 2000 for its steady growth that figured during the global financial collapse. India is not only a key member of the Global South and has hosted the Voice of Global South conference since 2023. It is an important platform for India. For India, the outreach session of G7 meeting that follows a day after main G7 deliberating has always been an important platform to showcase its achievements and outlook to the world. What is the future of G7? और इसमें G7 में कितने कंट्री हैं? देखो, G7 is increasingly under attack on being an elitist, non-inclusive group that does not include 3 of world of top economy, China, India and Brazil. So representation form जो है in like G20 in addition to G7 which was not increased the membership. 2014 में Russia was a member of G7. Now Russia is not a member of G7, right? So इसमें like UAE, Saudi Arabia, Iran, that were Egypt and Ethiopia. So that G7 has been unable to change the course of Russia invasion of Ukraine or stop Israel devastating bombardment of Gaza, that to deter China from its broad into global connectivity and infrastructure and economic influence, that is raising more questions about its relevance. PTSD, which is known to be a what? PTSD का मतलब क्या है ये देखो. Around 4% जो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हैज सफर्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. उसके बारे में है दिया हुआ इसमें जो हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं. सिंगल एग्ज़ाम, नीट कंट्रोवर्सी, एनटीए के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में दिस आर्टिकल दैट इज़ क्वाइट सिमिलर जो हमने फर्स्ट में भी डिस्कस की थी. नाउ सार्क कंट्री को ये बेसिकली एक नोट्स टाइप से बना हुआ है कि इसमें आपको ये जानना है कि सार्क कंट्री को कैसे इस्टेब्लिश किया गया. नोट्स आपको इसी वे में बनानी है, the kind of mind maps which will be very helpful for you guys. Here is the very first questions. Are you guys ready for the questions of the day? And yes, the very first question is National Testing Agency. NTA is an autonomous organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. The NTA conducts entrance examination for admissions to all higher education institutions in India. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इज करेक्ट वन. NTA NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट controversy highlights systematic failures and poor policy implementation over the years, recurrent paper leaks, exam cancellation, incorrect results, and unexplained grace marks have eroded trust in National Testing Agency. So NTA
is an autonomous organization registered under the Indian Society Registration Act of 1860, and it conducts entrance examination of admission into higher education institution, not all in India. So NTA is chaired by an eminent educationist appointment by the Ministry of Human Resource Development, with the Chief Executive Officer that serving as a Director General appointment of the government. Its function include identifying partner institution for online examination, creating question bank, fostering research and development. Let's move to the next question. Not a member of G7, Russia 2014 में is a member of G7, but now not a member of G7. So it's a group of library group of G6 जिसमें कि रिवर्जन हुआ. Canada, France, Germany, Italy, Japan and UK and the United States. Jugantar and Bharat Mata Association एक revolutionary groups हैं. The first half of 20th century revolutionary groups sprang up mainly in Bengal, Maharashtra, Punjab and Madras, and the revolutionaries were not satisfied with the methods of both the moderates and extremists. Hence they started many revolutionary secret organizations. And the next one, Servants of India Society is established here गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के राय में. तो माय फ्रेंड ये फर्स्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तो स्टेटमेंट गलत है. Yes, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले the established Servants of India Society was formed in Pune. The society organized many campaigns to promote education, sanitation, healthcare and fight to social evils of untouchability and discrimination, alcoholism, poverty, oppression of women and domestic abuse. So in third publication of the Hitwada, the organ of society in English from Nagpur, commenced in 1911. Who is the headquarters of the Indian Ocean Rim Association, or Mauritius is the right answer, C1. So guys, this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section, and please share this session to your friends and family. They must aware about what is happening around us. And thank you so much for joining with us. If you are new to the channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Thank you so much guys. Bye bye and take care. We'll meet you in the next YouTube session. Bye bye and take care. अपना ख्याल रखें.